Samapal Khushi. In this video, we are going to learn collectively all the question answer मतलब आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर्स आ सकते हैं फ्रॉम द सिविलाइजेशन पार्ट. ओके, सो वील बिगिन फ्रॉम HSC 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 44, लेसन नंबर 1. तो लेसन जब एंड होता है उसके बाद यू हैव अ पार्ट विच इज कॉल्ड सिविलाइजेशन. तो यू हैव टू लर्न, मतलब you have to memorize this fact. I won't say mug up, but you will have to memorize these facts. So let us begin. I'll translate. I'll first read in French and then I'll translate it into English. Page number 44 first. Okay. So first one is La France et ses spécialités gastronomiques. The France and its gastronomic specialities. Gastronomic means food related. Okay. Allons découvrir quelques spécialités de la gastronomie française. Let us discover some specialities of the French gastronomy, of the French food, basically. Il y a plus de, il y a plus de 4-5 fromages en France. There are more than 400 cheese in French. There are more than 400 types of cheese in French. So France is famous for cheese. Quelques fromages français bien connus sont le camembert, some cheese well known, some French cheese well known. Bien connu means well known. You can side by side start writing the meanings of the words which you do not know. So, quelques fromages français bien connus sont. So, the cheese well known are, it is what? Are, then you have camembert, a fromage de la Normandie. So the one of the most famous cheeses, Le Camembert. It is a cheese from the Normandy. Normandy is a place in France. Next name of famous cheese is Le Roquefort. Le Roquefort, a fromage bleu, a blue cheese. Roquefort is a blue cheese. And the next one is Le Comté. Le Comté is a fromage du Jura, a cheese of Jura. So Camembert was from Normandy. Roquefort is a blue cheese. Le Comté is a cheese from the area of Jura. Okay. This way you will have to remember कि किसके बाद क्या आने वाला है. लाइक आफ्टर कामाबेट के बाद यूल राइट अ चीज फ्रॉम नॉर्मंदी. रॉकफोर्ट के बाद यूल से ब्लू चीज. कॉम्ते इज फ्रॉम जूरा, द रीजन ऑफ जूरा. अब इसमें सब में कॉमन चीज क्या है, दैट एवरी चीज, द नेम ऑफ द चीज, उससे पहले आता है मैस्कुलिन आर्टिकल द, दैट मीन्स ल. This was about cheese. Now moving forward, le Bordeaux, le Bourgogne et le Champagne sont les vins les plus importants. The Bordeaux, the Bourgogne, and the Champagne are the wines the most important. So France is famous for firstly cheese. Cheese में तीन types है. I'm revising it once again ताकि आप memorize कर पाओ. Camembert was from Normandy. Roquefort is the blue cheese. Comté is cheese from Jura. Then सेकेंड पॉइंट इज वाइन्स. वाइन्स में कौन से इंपॉर्टेंट है? वाइन में भी सारे जेंडर्स क्या है, मेस्कुलिन ओनली, ल ल एंड ल. क्या है, बी बी एंड देन यू हैव सी. बोर्तो, बुरकोइने एंड शैम्पेन. ल बोर्तो, ल बुरकोइने, ल शैम्पेन. चीज हो गया, वाइन हो गया. मूविंग फॉरवर्ड, goûter les plats célèbres comme la galette bretonne, la crêpe, la fondue savoyarde et la quiche lorraine. So let us taste the different dishes. Les plats means dishes. Célèbre means famous. So let us taste famous dishes like la galette bretonne. Galette, these are the names of famous dishes. Like from Maharashtra, we have vada pav, we have misal pav, for example. So that way, from France, what do we have? La galette bretonne, la crêpe. Crêpe, you might know, crepes. Then you have la fondue savoyarde et la quiche lorraine. These four, इसमें अगर आप देखोगे, कॉमन थिंग फ्रॉम दीज फोर नेम्स इज कि सबका ला ला ला. सो एवरीथिंग इज फेमिनिन, सो दैट मेमोराइजेशन पार्ट यू डू नॉट हैव टू डू. नाम क्या है? ला गालेथ ब्रेटॉन, क्रेप, fondue savoyard and la quiche lorraine. So first point was about cheese, second one is about wines, third one is about the famous dishes. This was about lesson number 1.
We will I'll make another part immediately after this for lesson number 2. If you have any doubt in this, do let me know in the comment section. And if you have any doubt in the grammar part as well, I am beginning with the crash course, so you can seek the details of that as well. See you in my next video. Till then, bye bye.